Good morning, children. So we are in lecture number 16 of chapter 14. What is the title of the chapter? India, location, structure and physiography. That is called part 2. Starting from page number 106 of textbook. Now see, let us discuss something about lecture number 15. In lecture number 15 I explained you what is meant by northern plains. Two different parts of northern plains that we have discussed. Then we have also discussed northern mountainous region accompanied by eastern mountainous region, which is the common part of Himalayan ranges, which we call. Then finally we have discussed peninsular plateau. Right? Two types of peninsular plateau. It is called Malwa plateau and Chota Nagpur plateau or Deccan plateau. Right? Now, continuing forward, we will study today coastal plains and archipelagos. Basically, in lecture number 15, I told you there are 5 physiographic divisions of India. Am I right? Out of that 5, we have studied 3. Clear? So 2 are remaining. That is to be studied in this lecture. Then after that, we are supposed to study new topic. That is called rock, types of rocks, and soil, types of soil. So basically, we have 3 topics in this lecture to cover. 2 types of physiographic division, 1 concept of rock, as well as the concept of soil. This lecture starts from page number 109. You cover page number 109 of textbook. Now you forget this 106 because it is a opening page. इधर से chapter शुरू होता है. At present we are on page number 109. Okay, let us see. First topic, coastal plains. Right? Peninsular coastal plain is surrounded by narrow belt of plains from Kutch to Odisha. Right? From Kutch to Odisha, we are having these coastal plains. Right? Just a minute. I can prepare. Right? If I am not wrong, it is somewhat like this. Right? This coastal plain is divided into 2 parts. Western coastal plain and eastern coastal plain. Right? This plain starts from here, that is from Kutch to Maharashtra, that is called Konkan. From Konkan to Kerala, that is called Malabar. And beyond Kerala, up to tip of India. So number 1, number 2, and number 3. These are the 3 parts of western coastal plain. Now, similarly, in eastern coastal plain we have 2 parts. That is part number 1 and part number 2. Right? So let me say, western coastal plain. First name of western coastal plain is, which is starting from Kutch up to Konkan, that is called Goa, including Maharashtra. It is called plains of Gujarat. It is called plains of Gujarat. Right? From Konkan, entire Goa, Karnataka, up to Kerala, it is called Konkan plains. It is called Konkan plains. Starting from Kerala up to end of southern India, it is called tip of India. It is called Malabar plains. So this plains of Kutch, Konkan and Malabar plains. Similarly, on eastern side, we are having 2 parts. Southernmost part of coastal plain is called plains of Tamil Nadu or Coromandel coast, Coromandel plains. It has 2 names. It is also called plains of Tamil Nadu or it is also called Coromandel plains. Above that, that is called from Odisha.
Circars. In English it is said Northern Circars. In original language it is called Uttar Sarkar. In Odisha it is called Uttar Sarkar. Here Uttar stands for North and Sarkar stands for Sarkar. Original name of that plane is Uttar Sarkar. It is transformed to Northern Circars. So this is a brief history of coastal plain. Starting from Kutch to Odisha or Bengal. Whole plain is divided into two parts, Western coastal plain and Eastern coastal plain. Western coastal plain have three names, Eastern coastal plain have two names. And then major ports of Western coastal plain and Eastern coastal. Take for example Kandla, Dwarka, Jamnagar, Okha, Porbandar. These are all the ports of Western coastal plain as well as Gujarat. Then comes to Mumbai, Goa, Marma Goa, Kochi. Right? These are all the parts of Western coastal plain. On the other side, you are in Trivandrum. Right? Then you are in Paradip. You are in Visakhapatnam. Finally, Calcutta. These are the ports of Eastern coastal plain. So this is my whole briefing before I start my topic. One more thing which we are supposed to study, that is over here. Specifically coastal area of Canada, this part. Say I am making it dark. Right? Basically it is called backwater lakes. Backwater lakes. That is called kayaks. Right? It is only found in Kerala. Right? Extreme end of Kerala where blackwater lakes are found, which are called kayaks. That is a new topic included in coastal plains of India. So I don't think whole topic is clear to you children. Now I shall start my reading part. You underline what I read. Come on. Western coastal plain. Peninsular plateau is surrounded by narrow belt of plains from Kutch to Odisha. It is divided into Western coastal plain and Eastern coastal. What I read, you have the eyes on map. So you can easily bifurcate. See the numbers I have given in short form I have written, so you can easily know which thing is located in which part. Right? It is divided into two parts, Western coastal plain and Eastern coastal plain. Right? The Western coastal plain extends from Gujarat to Kerala, southern tip of India, up to end of Kerala. Right? Except in Gujarat, this plain is mostly narrow. Because see, the western part of Arabian Sea, it is almost narrow because it is just followed by Western Ghats, starting from Vapi up to Kerala. It I told you in previous lecture. Right? If you go by road to Maharashtra, see after crossing Vapi, you will find some deformation, right? Difference in land formation. Land will come to rise. आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल हिल्स ऐसे सब शुरू हो जाते हैं. जैसे आप दमन क्रॉस कर देते हैं, बराबर, उसके बाद तो बड़ी बड़ी काफी बड़ी बड़ी हिल्स, पूरी रेंजेस शुरू हो जाती है. वो रेंजेस गुजरात से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? ऊटी. ऊटी इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स. राइट? उधर पेनिनसुलर इंडिया में दोनों घाट्स मिलते हैं, उधर वो समाप्त होती है. दैट मीन्स वेस्टर्न घाट्स run totally parallel to western coastal plain, and hence the portion which is left over to sea is quite narrow. Right? It's not having a broad base, because as landmass starts, as some landmass is covered, there is starting off Western Ghats. Is it clear? Except in Gujarat, these plains are very narrow. It is very much undulting
and is called Malabar coast in south of Goa. That means after crossing Karnataka. Starting of Kerala, from whole northern Kerala to southern Kerala, it is called Malabar plain. From Goa to Karnataka, it is called Konkan plain. And above Goa to Kutch, that is called Mumbai, eastern and western part of Maharashtra coast, then all Surat, Bhavnagar, Dwarka, Jamnagar, Porbandar, this all places up to Kandla is called plains of Gujarat. Right? Yes, western coastal rivers have developed deep creeks and estuaries. There are only two rivers flowing in western coastal plain, that is called Narmada and Tapi. Because of their constant flow since millions of years, huge estuaries are created at their mouth. Right? Just now, in this monsoon, you have seen the flow of Narmada. Understood? The breadth of Narmada in Bharuch is approximately 1.4 kilometers, crossing that Narmada bridge. Right? It is 1.8 kilometers long. The breadth of Narmada is 1.4 kilometers. माने 1.5 किलोमीटर उसकी ब्रेथ है, उसमें से इतना पानी बहता है, तो मान लो वो नदी जब गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है तो कितना बहाव, कितने फोर्स से अंदर जाती है, कितनी बड़ी एस्चुरीज उसके अंदर डेवलप की रखी होगी. And this process is not followed since last 5 or 10 or 15 or 50 years. It is followed since millions and millions of years. Right? नर्मदा के जन्म के वक्त वो गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है, तब से आज तक वही फ्लो है. है समझ में? So estuaries are developed. Most of these estuaries and creeks are submerged valley under river water. That means river water is covered throughout the year. And you know, no doubt, we call Narmada as a non-perennial river, but it is almost perennial because see, heavy rainfall starting from Chhattisgarh, whole of MP, नर्मदा का मैप देखो तो MP को वो बीच में से काट के चली जाती है, गुजरात में एंटर होती है. समझ में? तो जितनी बारिश ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड के इलाके में और MP के इलाके में होती है, वो सारा पानी नर्मदा में मिलता है. और जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो सरदार सरोवर बंद है, हम देखते हैं गुजरात में, और उसके बाद वो नर्मदा खुली हो जाती है ताकि except months of summer, that is what you say, just 2 or 3 months after March, April, May, there is water throughout the year in this river. And because of this water volume, the mouth is almost submerged. Estuaries are almost submerged. हाँ, कई बार मान लो कि कोई बारिश नहीं हुई इस साल, नर्मदा मतलब MP में कम बारिश हुई, झारखंड में कम बारिश हुई, तो ये हो सकता है. And you know, rainfall are irregular. It is not like that. It rains heavily every year. No, last year भी खूब बारिश हुई, इस साल भी खूब बारिश हुई, तो अगले साल का हम ऐसा नहीं कह सकते इतनी बारिश हुई, शायद ना भी हो, तो वो लोग लैंडफॉर्म है वो ऊपर आएगा क्योंकि उधर पानी सूख जाता है. Right? Therefore, due to submergence of seashore, मतलब नदी के बहाव में seashore जो है वो जो सबमर्ज हो गया है, मतलब डूब गया है, उसके पर से नदी का बहाव चला जाए. मतलब sea water does not get attracted there because of the force of river water. इतना फोर्स में से रिवर में से पानी आता है ताकि सी का पानी कहीं कोसों दूर आ जाता है. Right? It provides favorable condition of fisheries, saltwater fish, freshwater fish. They are different. Here you will find third type of fishes, right? Because of mixing of saltwater and freshwater. There are many natural ports on western coast, which include Mumbai and Marmara. Backwaters have developed in the southern coast of Kerala, which are called kayaks. That are from backwater lakes, right? The eastern coastal plain is much broader than the western coastal plain.
It is a substantial alluvial deposit by river deltas of Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi. बड़ी बड़ी नदियाँ वेस्टर्न घाट्स में से निकल के, नॉर्दर्न इंडिया में से निकल के बे ऑफ बंगाल को मिलती है। जैसे आपको दो नदी मिलती है, नर्मदा तापी, उधर तो 4 से 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं। गोदावरी जो नर्मदा से भी बड़ी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है, महानदी है, राइट, और कई सारी छोटी नदियां हैं। सो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न सिलकास, जो मैंने वन लिखा है, एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और कोरोमंडल कोस्ट। 1 और 2 देखो आपने मैंने लिखा है। तो ये बात हुई कोस्टल प्लेन की। अभी हम बात करेंगे आर्किपेलागोस की। There are few archipelagos in India, means islands. Andaman and Nicobar and Lakshadweep are the major islands of India. There are many small and big islands in Lakshadweep, which are located in the distance of sea coast of Kerala. There are some, underline this line as a key line, important MCQ SQ blank. There are some islands having horseshoe shape, which are made up of corals, and these coral islands are called atolls. उसको हम atolls बोले जाते हैं। उसका शेप कैसा है? horseshoe जैसा, ऊपर से फ्लैट, नीचे से क्रेसेंट मून की तरह, सेमी सर्कल की तरह, उसको horseshoe island बोलते हैं। जो घोड़े का पांव होता है उसके शेप के आइलैंड बनाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या बना? horseshoe island, right? Andaman Nicobar island is situated in Bay of Bengal, and there are a number of small and big islands situated very far from Indian coast. There are a few mountain ranges which is formed due to volcanic activities. These islands are almost 350 kilometers away and strategic important island. उधर हमारा इंडियन नेवी का बेस बना रखा है ताकि पूरे इंडियन ओशन में हम झांक सकें, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकें। आप देखो अंडमान निकोबार आइलैंड पे या लक्षद्वीप पे, दोनों पे भारतीय नेवी, इंडियन नेवी का बेस बना हुआ है, इसलिए हमारी सरहद काफी हद तक मजबूत हो सकती है, राइट? Strategically importance from military point of view. Now we are switching over to concept rock. What is meant by rock? First 2 marks definition. Underline. What is meant by rock? हमने पढ़े ही है, लेकिन वापस हम underline करते हैं. A composite matter, right? Solid matter, made up of one or more mineral is called rock. Rock can be hard as well as soft. ऐसा नहीं है कि रॉक हमेशा हार्ड ही होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, राइट? इट कैन बी पोरस एंड नॉन पोरस, राइट? पोरस मतलब पानी सूख जाता है, पानी सक कर लेता है। नॉन पोरस मतलब पानी को एब्सॉर्ब नहीं करता। इट कैन बी लाइट और हैवी। जरूरी रॉक हमेशा हैवी होता है, कई लोग लाइट भी होते हैं, राइट? Various types of rocks are formed due to different process. Rocks can be divided into 3 categories on the basis of their formation. Right? Number 1, igneous rock. Number 2, stratified rocks. Number 3, metamorphic rocks. Now let us explain each individually. Igneous rock. The intense heat of the interior part of Earth is responsible for formation of this rock because of intensity of heat. These rocks are formed. The interior of Earth remains very hot due to this heat. और ये heat की वजह से जो ऊपर का पार्ट सख्त हो जाता है, उसको rock बोलते हैं, बराबर है? So the matter here in a semi-liquid state, which is called magma, eventually when the magma cools down, ऊपर जब वो ठंडा हो जाता है, नीचे
नीचे गर्म होता है, ऊपर आके ठंडा हो जाता है। दिस रॉक्स आर फॉर्म। ये प्रोसेस होने में कई साल लगते हैं, करोड़ों साल लगते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैग्मा निकला, कल ठंडा हो गया, परसों रॉक बन गया, ऐसा नहीं। It takes millions and millions of years, right? These rocks are formed due to effect of heat, hence they are called igneous rock. अग्नि पत्थर। हीट मतलब अग्नि। अग्नि शिखा में से जो पत्थर प्रज्वलित हुए हैं, अग्नि में से जो पत्थर बने हैं, उसको हम अग्नि पत्थर बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं igneous rocks, right? In the formation of the crust of the earth, these rocks are the earliest. सबसे पुराने पहाड़, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, लिथोस्फीयर हो रहा था, और जब कूल डाउन हो रहा था, और कई सारे चेंजेस आ रहे थे अर्थ के मतलब फॉर्मेशन में, और वो सबसे बढ़िया फॉर्मेशन, सबसे पुराना फॉर्मेशन माना जाता है समझ में? They are also called primary rocks, right? They are found in Rajasthan, MP, Southern Peninsula of India. Igneous rock are most solid part of rocks, and the example is granite and basalt. Granite and basalt are the most formed igneous. Then come to stratified rocks. Second part, so stratified rocks. Igneous rock disintegrate due to collective effort, effect of water and other forces. These are known as sedimentary rocks. The broken rock material is constantly deposited in water and they form layers. Thus, rock material is deposited into different layers. They are deposited into different layers. Right? The upper layer exerts pressure over the layers of underlying rocks, which are formed initially, and at the bottom. And eventually these rocks are formed with different layers, hence they are called stratified rocks. ऊपर नीचे के प्रेशर के बहाव से ज़्यादातर प्रेशर और कम प्रेशर और सभी जगह प्रेशर एक समान तो नहीं होता, तो प्रेशर के हिसाब से जो रॉक्स बनते हैं उसको हम स्ट्रैटिफाइड रॉक्स बोलते हैं। अच्छा, उसका एग्जांपल क्या है? जिप्सम, लाइमस्टोन एंड कोल। कोल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। फिर आते हैं मेटामॉर्फिक चेंज रॉक्स। In certain circumstances, the form, the composition, other characteristics of rock is totally changed. जो रॉक बना होता है वो एक किस्म का होता है, फिर नेचुरल फैक्टर की वजह से उसका फॉर्मेशन सतत चेंज होता है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट आउटसाइड, और वो बना है कई सालों के बाद वो अलग ही हो जाता है, पूरा उसका फॉर्मेशन बदल जाता है, और ये जो बन के जो अपना फॉर्मेशन बदल देता है उसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट? Due to the combined efforts of the two factors like high temperature, pressure and rock strata, igneous and sedimentary rocks change their totally into new form. These newly formed rocks are called metamorphic rocks. Marble and quartz is the best example of Rajasthan metamorphic rocks. सारे राजस्थान में आप जाओ जहाँ से मार्बल निकलता है, मार्बल कौन से रॉक में से निकलता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक्स में से निकलता है। एक राजस्थान में इस तरह के पहाड़ है और एमपी में इस तरह के पहाड़ है, कटनी रीजन बोलते हैं, नर्मदा जहाँ से पास होती है वो कटनी एरिया है, राइट? इंदौर, कटनी, जबलपुर, वो सब एरिया में भी स्ट्रेटिक मेटामॉर्फिक रॉक्स दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कई घर में आप देखते हो तो राजस्थान का मार्बल व्हाइट आता है, जो कटनी एरिया का मार्बल है जबलपुर का वो येलोइश या ग्रीनिश का पिस्ता कलर पे आता है। कई जगह आपने पिस्ता कलर के मार्बल देखे होंगे, उसको कटनी मार्बल बोलते हैं, बराबर? तो वो जबलपुर वाला मतलब चेंज कलर ऐसे हो सकता है, राइट? फॉर्मेशन अलग अलग होती है। तो ये हमारी बात हुई मेटामॉर्फिक। अब छोटी सी बात पहले मिनरल्स की। व्हाट इज मिनरल? डेफिनेशन। Minerals is this matter
which is formed due to natural, organic or inorganic process and a specified chemical composition. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ जो कोई चीज है जिसका एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है, जो नेचुरली बना है, उसको हम मिनरल बोलते हैं। है समझ में? मिनरल्स आर अवेलेबल इन द इंटीरियर क्रस्ट ऑफ अर्थ। मिनरल्स में भी सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म possible, right? The common minerals which are found is iron, nickel, gold, silver, etc., which are found from igneous rock. Minerals भी पहाड़ के हिसाब से मिलते हैं। जैसा जहाँ पहाड़ होता है, फॉर्मेशन होती है, उस टाइप के मिनरल्स उधर पाए जाते हैं, right? Coal, mineral oil and natural gas is found from stratified rocks. White slate, marble, diamond are found from metamorphic rocks. Now, let us see. In our daily routine, we use about 200 types of minerals directly or indirectly in our daily life. सुबह से शाम तक हम 200 से ज्यादा मिनरल्स की यूज करते हैं। कौन सा मिनरल कब यूज करते हैं हमको तो मालूम नहीं, लेकिन रोज एवरेज हम 200 से ज्यादा मिनरल्स की यूज को डेवलप करते हैं। मेटलिक मिनरल्स, प्रेशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, फिर लाइट मेटलिक मिनरल्स, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम एक्सेट्रा। फिर मिनरल्स ऑफ जनरल यूज, आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, निकल एक्सेट्रा। और मिनरल्स यूज्ड एज एलॉयज, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, बेरिलियम एक्सेट्रा। नॉन मेटलिक मिनरल्स है लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टोस, माइका, फॉस्फोरस, जिप्सम, सल्फर, डायमंड एक्सेट्रा। और एनर्जी मिनरल्स है कोल, मिनरल, यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा। तो ये बात हुई सारे मिनरल्स। और आपको एक टेबल दिया गया है पेज नंबर 110 पे। वो टेबल के हिसाब से आपको ये मिनरल का टेबल करना पड़ेगा, बराबर है? वो आप मिनरल का टेबल करो तो आपका कौन से स्टेट में कौन से स्टेट में बोला कौन से मिनरल मिले जाते हैं वो आपको पता चलेगा। Now we are switching over to soil. What is meant by soil? We all know that soil is a basic resource of agriculture. मिट्टी के बिना तो एग्रीकल्चर पॉसिबल है ही नहीं, तो soil की बात कर रहे हैं। Besides agriculture, soil is very important. मिट्टी है तो जिंदगी है। हम ऐसे फिलोसॉफी में बोलते हैं ना, हमारा शरीर भी पंच तत्वों में से बना है, मिट्टी में से बना है। आखिरकार जब गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो भी हमारा ये जो शरीर है मिट्टी को मिल जाता है। मिट्टी में से बनाया हुआ शरीर मिट्टी को वापस देना पड़ता है। What is important on soil? You know, since ages. Now, what is meant by soil? Soil is a thin layer formed for the organic and inorganic matter on the surface of Earth. Very thin layer on the upper crust of Earth. अर्थ के ऊपरी पड़ाव में जो लेयर बना है उसको हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल इज रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ अर्थ इन द सेम वे एज द एप्पल इज रिलेटेड टू स्किन। जैसे हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसमें उसकी स्किन, तरह चीकू खाते हैं तो चीकू में स्किन होती है, एप्पल में स्किन होती है, बनाना में स्किन होती है, अनियन में हम देखते हैं तो स्किन होती है। तो इसी तरह जैसे हमारे शरीर में चमड़ी होती है, अगर हम स्किन की बात करें, स्किन से अंदर जाए हमारा शरीर भी सब कुछ दिखाई देगा। ठीक ऐसी तरह अर्थ के अंदरूनी हिस्से को जो संभल के रखता है, पकड़ के रखता है, उस पे लेयर बना रहा है, उसको जनरली सॉइल बोलते हैं। ऐसा नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स। डिग्रेडेशन मींस द इरोजन ऑफ रॉक्स। करोड़ों साल लगते हैं। The rock surface is eroded due to factors like temperature, rain, snow, air, vegetation, and insects, which turns into powdery form. Thus, it forms a thin layer by stone, pebbles, gravels, particles, etc., which is called regolith. It is called regolith. आया समझ में?
It contains mineral contents such as biotic, air, water, etc. And finally, all this mixes and makes a soil. तो ये बात है वही soil की. अब हम पढ़ेंगे types of soil. पहला है हमारा alluvial soil. Turn your page 212. What is meant by alluvial soil? Alluvial soil is divided into two parts, khadar and bangar. Two types of soil. Clear? The soil formed due to fresh alluvial deposit is called khadar soil. And as the soil is formed due to river floods, it is mostly nearby rivers. Generally, this soil is sandy. Soil containing old alluvium in the upper valley region is called bangar. मतलब नई soil को हम bangar बोलते हैं, पुरानी soil को हम खादर बोलते हैं. नया formation को bangar बोलते हैं, पुरानी formation को हम खादर बोलते हैं. Right? It is sticky and hard and dark in color. Alluvial soil is seen in different parts of nation. खास करके northern plains में सबसे ज़्यादा alluvial soil दिखी जाती है. Right? It is sticky and dark in color. Alluvial soil is seen in many parts of the nation. Their fertility is different from places to places. बोलते हैं उसको alluvial soil, लेकिन उसकी fertility ratio अलग-अलग होते हैं. कहीं ज़्यादा fertile होते हैं, कहीं कम fertile होती है. Generally, the soil is very fertile. It is found in Punjab, UP, Bihar, West Bengal, etc. Right? अभी हम बात करेंगे black soil की. This soil is mostly found in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, and Tamil Nadu. Underline these states. That is why I am reading slowly, ताकि आप मेरे साथ underline कर सको. Black soil is a gift of peninsular volcanic eruption की वजह से. बहुत सारे volcanic eruption हो गए. इतना मैग्मा बाहर बहा होगा. वो मैग्मा करोड़ों साल के तहत पीड़ा हुआ और वो कूलिंग डाउन के प्रोसेस से जो सॉइल बना उसको बोलते हैं हम ब्लैक सॉइल. राइट? दिस सॉइल इज वेरी स्टिकी एंड फर्टाइल. इट कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट इज फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल स्टॉक एंड वेरी यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन. दैट इज व्हाई इट हैज बिकम famous black soil, which is also called rigor soil. Right? Now, red soil. Subsoil is found in regions of igneous and metamorphic rocks. Right? Its red color is due to ferrous and other humus contents. इसकी वजह से उसका जो कलर है वो बिल्कुल रेड कलर हो गया क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है. The soil is porous and fertile. Subsoil is seen in Goa, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, and Jharkhand. Clear? Now we'll come to laterite soil. Laterite soil develops as a result of excessive erosion of rain. जहाँ बहुत बारिश होती है और पहाड़ में से ऊपर से मिट्टी घिस के नीचे आती है और वहाँ सैकड़ों के नेचुरल फॉर्मेशन की वजह से वो जो सॉइल होती है नेचुरल फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से उसको बोलते हैं लेटराइट सॉइल. राइट? ड्यू टू हैवी रेन द ह्यूमस कंटेंट फ्रॉम द टॉप सॉइल डिसेंड्स इनटू लोअर स्ट्रेटा व्हिच इज कॉल्ड लीचिंग. पहाड़ के ऊपर से जो माटी नीचे आके सैकड़ होते हैं उसको लीचिंग बोलते हैं और लीचिंग की प्रोसेस से जो माटी पैदा होती है बनती है उसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं. बहुत फर्टाइल होती है vegetation. Agriculture. Right? As the soil contains less humus, it is less fertile. The red sandstones contain iron and aluminum. The erosion of these rocks result into red color. Such soil is formed in mountainous region of Deccan, Karnataka, Kerala, Odisha, and some part of northeast. Right? Now, mountainous soil. Humus content is more due to forest, although it differs from place to place. जहाँ घने जंगल होते हैं, dense forest उधर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ स्पेस जंगल होते हैं ह्यूमिडिटी कम होती है. तो इसके हिसाब से ह्यूमिडिटी के हिसाब से ये सॉइल बनती है जिसको माउंटेन सॉइल बोलते हैं.
Such soil on shivalic range is less fertile and less will come humidity with the air, right? The soil is sandy and porous and does not contain any humus. Such soil is found in mountainous region of the countries such as Meghalaya, Arunachal Pradesh, Eastern Hills, Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Jammu Kashmir states. These are called soils, right? That comes to finally desert soil. Such soil is found in the arid and semi-arid regions of Gujarat, Rajasthan, Punjab, and Haryana. The soil is more alkaline. Alkaline means नमक वाला particles. अगर ये मिट्टी को आप चखो ना, तो आपको थोड़ी सॉल्टी लगेगी, टेस्ट सॉल्टी लगेगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है. And has less humus content. Agriculture is made possible in such soil through irrigation. Right? Thus, a large diversity of soil of a nation is seen due to different climate and relief features. तो ये जो हमारा हुआ, वो पूरा लेसन का वापस रिवीजन हुआ. एक टॉपिक कौन सा था? कोस्टल प्लेन्स का था. दूसरा टॉपिक कौन सा था? कोस्टल प्लेन में मैंने आपको सिखाया दो पार्ट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल, उसके नाम के हिसाब से हम चले. फिर हमने पढ़ा रॉक्स और सॉइल के बीच में छोटा सा टॉपिक आया था मिनरल्स, वो हमने लिखा नहीं लेकिन हमने पढ़ा है. और इसमें मिनरल्स और कंटेंट, we know precious minerals and all these things. Then we have studied different types of rocks, igneous rocks, modified rocks and whatever. हर एक रॉक कैसे बनता है, उसमें से कौन से मिनरल निकलते हैं, कौन से लोकेशन पे, कौन से स्टेट में रॉक्स पाए जाते हैं, सब हमने पढ़ा. Then finally we came to the topic of types of soil. Alluvial soil हमने पढ़ा. कौन से soil? Alluvial soil के प्रकार कितने होते हैं. फिर हमने पढ़ा what is the black soil, where it is found. फिर हमने पढ़ा red soil. फिर आया laterite soil. फिर आया माउंटेन सॉइल और फिर आया डेजर्ट. तो इसके हिसाब से हमारा पूरा लेसन इधर खत्म होता है. तो वापस में 2 मिनट में आपको पूरा लेसन बताता हूँ. तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 14 था, उसका पूरा हिस्सा निकाले. तो हमने कौन से टॉपिक पढ़े? तो टॉपिक नंबर 1 उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन. टॉपिक नंबर 2 को बोलते हैं नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन. नॉर्दर्न माउंटेनस रीजन में भी दो बार की पढ़ाई की, एक प्रॉपर हिमालयास की और ईस्टर्न हिमालयास की. उसके बाद हमने पढ़े नॉर्दर्न प्लेन्स, पेरेनियल रिवर्स, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सतलज, वो सारी नदियाँ, एक्सटेंशन वो सब पढ़े. उसके बाद पढ़े हमने पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में, कहाँ से पेनिनसुलर प्लेटो का एक्सटेंशन होता है, कहाँ तक खींचते हैं. उसके भी 2 हिस्से थे, मालवा प्लेटो और डेक्कन प्लेटो, दोनों कहाँ गए हिल्स से. फिर इसके बारे में पढ़ा कोस्टल रीजन का, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. उसके बाद हमने पढ़े आइलैंड्स के, ईस्ट में कौन से आइलैंड्स है, वेस्ट में कौन से आइलैंड्स है, एंड हाउ दीज आइलैंड्स आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली एज वेल एज अंडमान निकोबार. फिर जाके हमने पढ़ा रॉक्स का, उसके बाद मिनरल्स का और उसके बाद फाइनली सॉइल और टाइप्स ऑफ सॉइल का, ताकि पूरा लेसन हमारा कवर हो गया है. समझ में? नाउ इट इज योर टाइम टू टेक योर होमवर्क. राइट डाउन योर होमवर्क. Question number 1. Right? Let us take question number 1.
coastal plains of India. Short note on coastal plains of India. Second, number 2, explain metamorphic rocks. Number 2, stratified rocks. Right? Question number 3. Write in detail about types of soil found in India. तो ये हमारे 3 क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट नोट ऑन कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन, डेफिनेशन लिखनी है आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स की। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा क्वेश्चन एलक्यू है, राइट अ डिटेल नोट अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। यू आर सपोज्ड टू राइट ऑल 6 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, राइट। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 14 इधर हम खत्म करते हैं। We'll see in next chapter with next lectures. Till then children, take care and bye. We'll see you next lecture. Right?